कोई जिपे को मुझे सियाक से ना यार मरीज एक बड़ा सीरियस है पहुंचाना अस्पताल दे दिया ना कितनी देर तक पहुंचते हैं 2-4 बंदे और बुलाई किनो मजबूरी करा तू 1500 रुपए मंगने जल्दी आ ठीक है ठीक आगे भी 1000 रुपए तुसी मुझे 1500 मंगने Pregnancy is not a disease. Yet every hour a Pakistani woman dies due to pregnancy-related complications. The causes of maternal mortality, despite being multiple and complex, are almost always preventable. Moreover, an estimated 225,000 children die every year during the first month of their life. Most of these maternal and neonatal deaths occur at home. 2/3 of expectant mothers in Pakistan deliver at home without any antenatal care, birth preparedness, or complications readiness. Trained health professionals attend to only 8% of these. This remains so despite an extensive network of public sector healthcare facilities. Poverty, cost of and distance from the healthcare facility, inadequate transportation, non-availability of female health personnel, and a lack of awareness and education keep expectant mothers away from these available services. So does the patriarchal structure of the society, the custom, the norms and the tradition that restrict and discriminate women in Pakistan. PAIMAN, Pakistan Initiative for Mothers and Newborns, a 6-year US aid-funded initiative, is working to reduce maternal, newborn and child mortality in Pakistan in partnership with the government of Pakistan since November 2004. The project aims at improving both the supply and demand side. PAIMAN is working in some of the remotest and most challenging areas of Pakistan, having minimal access to various forms of modern communication. International experience has emphasized the importance and impact of social, cultural, and economic facts on the health of mothers and children. The strategic communication about mother and children's health has therefore shifted from a mother-centered approach to a more generalized approach involving family and community. There are important and key stakeholders and target audience, and if we have to be successful in our interventions and achieve results, then we should reach them and engage them as partners in our project activities. So one of the most important stakeholder and target audience which was identified were Ulama. Because in PAIMAN, out of 24 districts, majority of the districts, they are conservative and rural districts. So we started this intervention with Ulama in 6 districts of Pakistan. Home to proud Pashtuns, Buneer and Dir districts of NWFP are rooted firmly in centuries-old customs and traditions. This is where PAIMAN initiated its pilot project of sensitizing and involving ulama, the religious leaders and scholars, in advocating and disseminating MNH messages. These ulama are held in great reverence in Pakistan in general, and in areas like Upper Dir and Buneer in particular. They have presence in the remotest parts of the country, reaching out and influencing conservative communities not within the reach of the conventional sources of communication. National Research and Development Foundation, the executing agency for the project, with extensive experience of working with religious leaders in the area, assisted in identifying senior male and female clerics, leaders and imam of mosque. Their association,
participation and contribution in turn won instant acceptability and trust of the target communities. At Hopkins, we are aware of the fact that historically, ulama have played a very important role in the development of Muslim societies. And any change in the society without their effective involvement is very difficult to bring about. But in PAIMAN, and especially in the kind of areas that this project is working in, ulama in some cases were the only viable medium of communication with the people in the streets. So we had very little choice. It was absolutely important to involve and work with them. Positive outcome and feedback from the pilot project encouraged PAIMAN to further expand the project into 4 districts of Punjab in July 2007. It has so far reached 2 millions of people in predominantly rural districts of Upper Dir, Punir, Tiji Khan, Khanual, Jhelum, Rawalpindi and Swat. In the second phase, 5 more districts of Peshawar, Diakhan, Charsadda, Mardan and Vihari have been added. Winning the support of these ulama was not easy. Initially, they had their apprehensions about the possible hidden agenda of family planning in the garb of maternal health. इबाम तो है, 2-4 उलमा कहते हैं ये मगरब की तरफ से आया है, वो कहते हैं कि शायद इसमें कोई और चीज़ होगी, खबर नहीं, ये माँ बच्चे की सेहत के एतबार से हो सकता है ये हमें हमारे बच्चे ना पैदा हों, तो ये जहलाना बात है, इसमें सदाकत नहीं है। तो इनका जो प्रोग्राम है उससे सारे इंशाल्लाह उम्मीद इत्तेफाक करते हैं। The success of the project lies in its strategy of consulting rather than dictating the ulama on how to go about sensitizing traditional communities about an otherwise sensitive issue. A high-level central committee, Shura, takes lead in all the key issues of the project. In addition, a 15-member pool of consultant ulama representing all major sects has also been formed. Services of its members are requested, as required, to provide input at various phases of the project. जब हम अपनी बात उनको इस अंदाज से समझाते हैं जैसे ये इस्लाम की बुनियादी हुकूक के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है तमाम उलमा ही होते हैं, सिर्फ ये है कि वो बात उनके जहन में होती है लेकिन उजागर नहीं होती। हम जब उसको उजागर करते हैं तो वो कहते हैं हाँ बात यही है। Central Shura, in consultation with PAIMAN, finalizes the selection criteria for mapping ulama around the health facilities. Afterwards, members of Central Shura visit these ulama and sensitize them about the potential health issues for women and children. So far, 400 ulemas have been sensitized and networked, while another 300 are being reached. और मैंने जुमातुल मुबारक के खुतबा में 1-2 में यही इसको बकायदा मौजू बनाया, और आप यकीन करें अल्लाह के फजल करम से उस पर बड़ी तब्दीली आई है, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ख़ासकर आज का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, वो यही है कि ख़ासकर ये बड़ी बूढ़ी ख़वातीन जो हैं वो बस ठीक है जी काम कर रही है तो करने दो, नहीं भाई उसका ख्याल तो करो, वो देखो वो क्या क्या बनने जा रही है। Quran and the teachings of the Holy Prophet remain the supreme source of inspiration for the engagement of ulama in the project. For these ulama, the message of Quran is not only a source of inspiration, it also provides the basic for ethical valuations and directions for worldly endeavors. जितने मैसेजेस हैं इंसानियत की बका के, इंसानियत की फलाह के, इंसानियत की उसके बचाव के लिए, वो सारे के सारे मस्जिद नबवी से निकलते थे। आज के दौर में जब हम मस्जिदों से ही बात करते हैं, अब यकीन करें प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन पहला खुतबा मैंने दिया, गालिबन इस बात को 1 साल होने को है, तो बड़े अजीब नज़रों से लोग मुझे देख रहे थे। मैं भी पीछे हट सकता था, लेकिन नहीं, चूँकि हमारी तरबियत इस किस्म की है कि खाली मेराब व मिंबर को यानी एक इबादत तक नहीं मखसूस करना, उसको मामलात तक चलाना है।
और मामलात, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, मामलात का आगाज़ होता है माँ बच्चे से। हमारे सारे मामलात का, हुकूक का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? उस बच्चे से हो रहा है जो अभी तक आया नहीं है। लिहाजा फिर जब दूसरा मेरा खुतबा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ज़हन थोड़ा बहुत बनता गया, और फिर वो जो पैगामात आते थे, वो जो लिटरेचर की सूरत में, बुक्स की सूरत में, वो हमने ऐसे ऐसे जगहों पर पहुँचाए जहाँ के वाकई ज़रूरत थी। इंसानियत फ़कत नमाज और रोज़ा इबादत नहीं है, इंसान को इन चीज़ों से जो ज़िंदगी में आने वाले ख़तरात से बचाना, उन्हें आने वाले ख़तरात से आगाही करना, ये भी इंसान की खिदमत है और ये भी इबादत है। हमें लोग देखते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत की रोशनी में, वो दूसरे लोगों की कही हुई बात को इतना तरजीह नहीं देते जितनी हमारी बात को तरजीह देते हैं। Many lives have been saved from breathing their last thanks to the concerted effort of PAIMAN and its partners. One such life is that of Allah Bakhsh's wife. Their first 2 children were delivered at home. One of them lost his life, while mother's life was at risk too. Slowly but surely, the Ulama intervention is taking MNH messages to the remote and conservative communities. कहीं को पता कौन है तें जाए वाले खुतबे के अंदर मौलाना साहब दसाए बेली औरत हामला होवे हुन सियाह के बारे में क्या किया वजे उन्हें दसाया बेली 4 दफ़ा उन्हें मुआयना कराया वजे। यहाँ पे इमाम साहब ने हमें बताया, हमारे मर्द हज़रात को भी ये बताया गया कि वो जब बच्चा पैदा होता है या बीवियों को हमल होता है तो उनकी किस तरीके से उनकी तीमारदारी किया करें या किस तरीके से उनका ख्याल रखा करें। हमारे मर्द हज़रात पर भी काफ़ी अच्छे असरात उन पे भी हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बीवियों की तरफ काफ़ी हद तक तवज्जो देना शुरू की है। The zeal and zest of the ulama in spreading MNH messages in the distant, far-fetched areas of the country is in harmony with recurring Quranic exhortation of the rights of women and mutual obligations of man and woman towards each other. जब हम उलमा के साथ काम कर रहे हैं तो इसके अच्छे असरात देखने में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये पूरी कौम का ये नारा होगा कि अभी अगर सबसे बड़ी जदोजहद है तो ये है कि माँ और बच्चे को बचाया जाए। And the ulama have spoken to the local communities on MNH related issues, and as a result of that, like so many people have got sensitized who were not sensitive to the rights of women and pregnant women, and now they are better equipped. And the doctors, the feedback which we have received from the facilities which PAIMAN is supporting, that after the involvement of ulama, more and more people are bringing their pregnant women to the hospitals, and as a result of that, the service delivery has improved manyfold. डिलीवरीज ना होने के बराबर थी इन छोटी जेरी में RSC। आई थिंक कि ये मुश्किल से महीने में 3, 4, 5 ज़्यादा 6 हो जाती होंगी, और आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि परसों मेरे हॉस्टल में 7 डिलीवरीज हुई हैं। As the faithful continue to throng the mosques for Friday congregation, the PAIMAN sensitized ulama continue to advocate the rights of expectant mothers and their newborns, bringing about a behavioral change that is changing the fates of many. فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب
وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب.